Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. 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 Good Good morning. Okay, couple of minutes and then we'll start.
Okay, so in our previous class, we have started about the immunization and vaccination. So we discussed about what is immunity, what is inherited immunity, okay, what is acquired immunity, and what is little bit. I think we started about immunization and vaccines. What is it? Okay, so all of you are clear with acquired immunity and inherited immunity. Okay, acquired inherited immunity. Inherited immunity means it is transferring by what method? Inherited immunity will be transferred from just a regular person to person, or it is what type of transmission? So inherited immunity is so transferred from the generations of the person. It is hereditary. Yes, that means it is a heredity. So it is transferred by hereditary, okay, or across generations. So it involves the DNA transfer. But acquired immunity is by microorganisms. Okay, by microorganisms. So we have these two types of immunity, and then the antibodies. I think we started about the antibodies. Antibodies? What we discussed? Did we discuss about the antibodies? Something you remember from the previous class? So you didn't actually discuss about antibodies. So you discussed till acquired immunity, and then so you told us in order to prepare for the Okay. chapter, the next paragraphs. So now let us then discuss about the from the antibodies. Okay. As the term suggests, antibodies means they are anti to something. Which bodies they are anti? They are anti to the foreign bodies. Okay. Antibodies are anti to foreign bodies. What are these foreign bodies? Foreign bodies means which are not our self. That is the non-self. जो चीज हमारा नहीं है, कहीं बाहर से आया है. So if this kind of things will enter into the body, then the body has to be alert. Okay. So then there may be some kind of dangerous viruses or microorganisms, and therefore what the body does is it produces antibodies. These antibodies are nothing but proteins. They are proteins. So you know that a protein is present in for example egg में protein है, milk में protein है, and meat, and also so many things are made of proteins. So these antibodies are also proteins, but if you look at the three-dimensional structure of the protein, it looks something like this Y-shaped structure. Okay, some Y-shaped structure. So this shape of the protein, what it will do, for example, if a bacteria has entered into the blood, okay, then the antibodies are going to coat this particular bacteria, पूरी तरीके से उसको कोट कर देता है, उसको सराउंड कर देता है. Okay, then what happens, it is in a way this bacteria is completely surrounded by the antibody, so it will not be able to do any harm. And then whatever our immune system is there, it can recognize that this is a special type of complex, and it will digest it. Okay, एक स्पेशल टाइप का इम्यूनोलॉजिकल सेल्स रहता है, वो इसको पूरा को खा के इसको एकदम डाइजेस्ट कर देता है. ठीक है, तो ये पूरा जो फॉरेन बॉडी को रिकॉग्नाइज करने का जो काम है, दैट इज डन बाय द एंटीबॉडीज. Okay, so antibodies are produced by the
cells of our body. Okay, and these they can distinguish between which is a self and non-self. Okay, till here it is okay. Now what happens is, when a person is exposed to, say, a particular bacteria or virus for the first time, so then what happens, that immune system, it will take more time to understand this particular thing is foreign. If it is foreign, then how we need to process and make the antibodies. मतलब पहला वाला जो response रहता है थोड़ा time taking response रहता है, लेकिन जब first infection, okay, antibody production is slow. Okay, but in the case of second and later on infection, if it happens again and again, क्या होता है कि जो पहला इन्फेक्शन हुआ उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का मेमोरी बन जाता है. ओके, दैट इज इम्यून मेमोरी, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी. क्योंकि ये मेमोरी है, इम्यून सिस्टम के साथ ये मेमोरी है, इसीलिए जब सेकेंड टाइम वो इन्फेक्शन होगा, दिस एंटीबॉडीज विल बी प्रोड्यूस्ड वेरी रैपिडली. Okay, they are very rapid. Therefore what will happen, Sir, your voice is breaking. Okay, so now it is coming fine. Okay, voice is okay, my voice is coming okay. yes, sir. Yes, sir. Now it is Yes, clear. Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, it is sir. coming. Okay, so what is happening, second infection, the antibody production is very rapid. Okay, why it is rapid? Because the immune system is having a memory, and after the first infection it does not take a lot of time to recognize that foreign particle, and immediately it will make a lot of antibodies, and therefore the body can fight against that infection. So this is a very important property for the particular any individual throughout the life. So once a person is getting some little bit of infection, the second third infection will be much more easily able to recover. Now इसी चीज को हम लोग यूज करके, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन बनाते हैं. ओके, तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज नथिंग बट you are taking that microorganism. Okay, whatever that microorganism is there, you are taking a killed preparation. ओके, जैसे कि कोई वायरस है, वायरस को आपने कल्चर किया, कल्चर करके हीट किया उसको. ओके, हीट करने से तो वो मर जाएगा, और क्या हुआ, कोई पर्टिकुलर केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं. ओके, सो इस टाइप के अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिए. किल करने के बाद वी आर इंजेक्टिंग दैट पर्टिकुलर killed preparation into a healthy person. ओके, अब इससे क्या होगा, ये जो किल्ड टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब इस हेल्दी पर्सन के बॉडी में जाएगा तो वो इम्यून रेस्पॉन्स करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा. ठीक है, तो ये उसके लिए क्या हो गया, ये उसके लिए फर्स्ट इन्फेक्शन हो गया ना. करेक्ट, क्योंकि इस हेल्दी पर्सन को ये फर्स्ट इन्फेक्शन हो गया, लेकिन डिसीज नहीं कर पाएगा. ये इन्फेक्शन कर देगा, मतलब इम्यून रेस्पॉन्स को स्टिमुलेट करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा, लेकिन इन्फेक्शन नहीं करेगा, उसका डिसीज नहीं करेगा. तो इसके कारण क्या होगा, जब उसको असली में इन रियलिटी
when that person is getting the infection for the second time, his body is already having the antibodies. Okay, so in reality, when he is getting the infection, okay, sometime in his life, then his body is able to produce the antibodies very quickly, very rapidly, and it is able to escape the infection. Okay, this part is clear. Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes, sir. so this vaccine, okay, injecting this vaccine to the population, okay, to the people, so that they can produce this immunity in that people, this process is called the vaccination, okay, or immunization. Okay, so the immunization program, it is able to save the life of many people as well as animals also. Okay, so there are many deadly diseases in humans as well as in animals. Okay, so vaccines have been produced, and these vaccines are given, after birth. आपको you may have observed, जैसे पोलियो वैक्सीन है, ओके, बहुत सारे वैक्सीन है, टेटनस है, मीजल्स है, मम्स है, कोलरा, सो बहुत सारे टाइप के डिसीजेस में वी आर गिविंग द वैक्सीन. Earlier when these vaccines were not there, okay, lot of people used to die, and there was no medicine also at that time. So now you have two ways, prevention and cure, दो चीज है ना. तो वैक्सीन इज ए प्रिवेंटिव मेजर, correct? Is the statement correct? Do you think that the vaccine? Yes, sir. It is a preventive measure, no? It is not. It is not a the cure for the disease. Is it a cure for the disease? It is not the No, treatment or sir. cure, है ना? तो vaccine is not the treatment or cure. It is a preventive measure. तो हम लोग पहले से ही बच्चों के स्टेज में, बच्चा के स्टेज में ही we are giving the vaccine, because you know that small children, they are more prone to diseases. आसानी से उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, उनका इम्यून सिस्टम उतना डेवलप नहीं होता है. तो अपन क्या करते हैं कि वैक्सीन जो चीज है, बच्चों को अर्ली स्टेज में दिया जाता है, ओके, सो दैट दे आर एबल टू फाइट द इन्फेक्शन मच बेटर. ओके, नाउ this killed bacteria or virus, okay, we can call them as antigens. Antigens, okay, antigens. gens क्या होता है? जेनरेटिंग. ओके, यहां इसका अगर आप तोड़ेंगे तो क्या होगा? एंटी बॉडी जेनरेटिंग. ठीक है, तो एंटीजन, एंटीबॉडी जेनरेटिंग, इसका मतलब ये हुआ कि वॉट एवर द पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म that is able to stimulate the production of antibodies in our body. जैसे कि अगर कोई बैक्टीरिया शरीर में आने के बाद एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर पा रहा है, तो क्या हम उस बैक्टीरिया को एंटीजन बोल सकते हैं? Okay, I think point is not clear. I will repeat once. Antigen means what? Antibody generating substance. So antigen यानी
इसी एंटीजन यहां से आया शब्द। एंटीबॉडी को जनरेट करने की कैपेसिटी रखने वाला अगर कोई भी पदार्थ है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको हम लोग एंटीजन बोल सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ एनी वायरस इन्फेक्शन हैज हैपेंड इन द बॉडी, but that virus infection is not able to stimulate the antibody production in the body, एंटीबॉडी नहीं बन रहा है बॉडी में, तो क्या उस वायरस को हम लोग एंटीजन बोल सकते हैं? एनीवन गेस? No, sir. Yes, we cannot say any substance or microorganism that can generate antibody, okay, in our body will be called as a antigen. Okay, so some of these antigens, they can be very strong, some of them can be weak. Okay, we will not go much into detail, that is not part of our this one. Okay, लेकिन स्ट्रांग और वीक एंटीजन में फर्क यही है कि अगर कोई एंटीजन बहुत स्ट्रांग है तो आप क्या गेस कर सकते हो मीनिंग क्या होगा? स्ट्रांग एंटीजन, वीक एंटीजन। स्ट्रांग एंटीजन का मतलब वो क्या करेगा? It is able to produce antibodies. Okay, it is able to stimulate the production of antibodies very strongly in our body. Weak antigen मतलब अगर वो चीज को हम लोग बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन बहुत कम होगा, बहुत हल्का एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसका मतलब है दैट इज ए वीक एंटीजन। तो ऐसे केस में क्या होगा? आपका वैक्सीन फेल हो जाएगा। बोलते हैं ना कि वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, वैक्सीन बना रहे हैं लोग, तो भाई सब वैक्सीन का ट्रायल सक्सेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर बैक्टीरिया या वायरस जो है उसको जब हम लोग किल करके उसका जो वैक्सीन बनाते हैं तो सभी वीक या स्ट्रांग किस कैटेगरी में आता है वो देखना पड़ता है। अगर वो वीक है इसका मतलब हमारा शरीर अच्छे से एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा उसके प्रति। अगर वो नहीं बना पाया तब फिर क्या होगा? वो वैक्सीन फेल हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? So lot of diseases the vaccines are available today, but there are a number of diseases for which we are not able to make vaccines. Okay, there are different reasons for that one. Okay, that we will that's not part of our this one, but in brief, either that microorganism is not able to produce properly antibody, वो weak है, या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बार बार चेंज होते रहता है। जैसे कि HIV है, HIV के डीएनए में बार बार चेंज आते रहता है, तो उसका जेनेटिक जो चेंज हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये कारण है। एनी डाउट्स यू हैव इन दिस इम्यूनिटी वैक्सीन, एनीथिंग? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, चलो, इफ इट इज क्लियर देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर which is the habit forming substances. Habit. So if a person is having a good habit, then the person is able to have a healthy lifestyle, is going to be healthy. A person who is not having a proper habit, okay, not good habits, then the person's health will be compromised. Okay, so here habit forming substances का मतलब क्या होता है?
So if any substance is being consumed, okay, and because you are consuming that substance, and the body, it will want to have that substance again and again, उसका habit बनाना. तो मेरा ये कहना है कि चीनी, शुगर, क्या शुगर को हम लोग हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस कह सकते हैं? Yes, sir. जैसे बच्चों को टॉफी देते हैं ना, एक बार टॉफी, दो बार टॉफी दिए, मुझको टॉफी चाहिए, ओके, इट स्टार्ट्स. सो दैट मीन्स इट इज फॉर्मिंग ए हैबिट. So can we call these chocolates or sugars and whatever, can you call that as a habit forming substance? So one of you has guessed that it is true. What about that? Yes, sir. Most of you say that it is a true. Yes, sir. Okay. अब देखिए, हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस का दो पहलू है. एक है कि एक बार कंज्यूम या कुछ बार कंज्यूम करने के उसकी आदत पड़ जाती है. हाँ, ये एक चीज हुआ. लेकिन इसका एक और पहलू ये भी है कि अगर उस चीज को छोड़ दिया जाए, इफ यू आर गेटिंग रीड ऑफ दैट सब्सटेंस, इफ यू आर नॉट कंज्यूमिंग दैट सब्सटेंस, then it will result in some kind of symptoms. Okay, these are known as withdrawal symptoms. Okay, withdrawal symptoms. विथड्रॉल सिम्टम्स, इसका मतलब है विथड्रॉ करना, हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं, विथड्रॉ करते हैं, विथड्रॉल सिम्टम्स. ओके, सो व्हाट इज दिस विथड्रॉल सिम्टम्स? जिस चीज का वॉट एवर सब्सटेंस द पर्सन हैज गॉट द हैबिट, once he stop consuming that one, then that person will display certain symptoms and certain behavior which are known as the withdrawal symptoms. That is also characteristic. Okay, so both these things are important. One is the person will want to have it again and again, and the other one is that there is going to be withdrawal symptoms. Now, if this particular substance is not having any serious health effects, health damage, can you still call that substance as a habit forming substance? For example, chocolate is there, moderate amount, यानी कि बहुत सारा moderate amount में बीच बीच में खाते हैं लोग, मिठाई भी moderate amount में खाते हैं, तो it is not going to cause any serious health damages, right? Children quite often consume these chocolates and cakes and all those things. So if it is taken in okay means not like too much overdose, then it is not causing serious health damage. So then we cannot take this under this habit forming substance. Okay, that is the reason why we are not including chocolates in this category. Okay, there should be some association of serious health damage also. Okay, चलिए, तब इसमें क्या क्या चीज इसमें Excuse me, sir. हाँ, yeah. Sir, I have a doubt. That you said that chocolate in a moderate amount, is okay for everyone. Mhm. But sir, our body is also addicted to carbohydrates. If we don't take it, our body will not function. No, that is not true. So, sir, that is not true. क्योंकि देखिए, हम लोग तो ये सोचते हैं, क्योंकि हम लोग तो चावल खाने वाले और गेहूं खाने वाले बेल्ट के लोग हैं, है ना. अपने देश में Yes, sir. ज्यादातर चावल गेहूं का कार्बोहाइड्रेट चलता है. दुनिया में ऐसे भी कई देश हैं जहां पे चावल गेहूं खाते ही नहीं है, दे डोंट कंज्यूम. ओके, देयर दे कंज्यूम द अदर काइंड ऑफ ओनली पोटैटो. जर्मनी, यूरोप वाले साइड में आप देखोगे, वो लोग जो है चावल और गेहूं से ब्रेड खाते हैं, बट फॉर देम द मेन थिंग इज पोटैटो, आलू.
Okay, so and for example, in Yes, sir. African countries, many African countries are there. They don't consume this one. They consume the millets. Millets यानी ज्वार बाजरा वो वाला टाइप का चीज. So carbohydrates are there in all of this. Okay, like Yes, sir. you use the specific term as a carbohydrate. Very good. So all of us are consuming carbohydrate, but if we do not consume carbohydrate, okay, Yes, because sir. the very term I told, chocolate and all of these also come under category of Carbohydrate. carbohydrates. Yes. अच्छा, तो Yes, sir. कार्बोहाइड्रेट में क्या है कि आपका जो शुगर है, शुगर में है सिंपल शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर. Complex sugar. हाँ, तो ये जो आपका सिंपल शुगर है, इसमें आपका ग्लूकोज और ये सब टाइप के सिंपल शुगर से सिंगल, और इसमें आपका आ गया स्टार्च एंड सेल्यूलोज मेनली. ओके, यही स्टार्च Yes, है sir. जो कि हम लोग ज्यादा खाते हैं, राइस हो, व्हीट हो एंड ऑल दोस थिंग्स. ओके, so the habit forming substances, in this definition of habit forming substances, this point is also important. It should cause serious health damages. लेकिन Sir, but yes, yes. many people follow keto diet and that all where they sacrifice carbs and they depend on fats basically for energy. So we can say that carbs are also habit forming substances. uh, yes, I will be taking the attendance. At the same time we will discuss. So carbohydrates are also habit forming, yes, no doubt about it. एंड इनफैक्ट आप नंबर वन कैटेगरी में आप चीनी को रख सकते हैं. शुगर जो कि हम लोग घर में कंज्यूम करते हैं, चीनी, दैट मे बी कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंसेस ऑन अर्थ. Okay, that is also a habit forming, but as I told you that this is a very fine line. एक होता है ना कि सीरियस हेल्थ डैमेजेस, ये एक सोशल इश्यू भी इसमें एसोसिएटेड रहता है, कि नॉट ओनली प्योरली साइंटिफिक, कि हम किस तरीके से चीज़ों को मतलब कैटेगराइज करते हैं. ओके, सो आई थिंक if you go by very strict, then you will say that it is habit forming substances, but socially also so many things are there which are acceptable and all those kind of things, तो उसमें नहीं include करते हैं. Okay, so I think for today's class we have already time is over, so we will meet in the next class. Okay, we will discuss further in the next class. Okay, Thank you, sir. thank you. Thank you, sir. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, sir. Thank you.